Alright guys, so in today's class we'll discuss a very important concept of arithmetic progression that is known as selection of terms. Now, whenever in the exam they'll be give you 3 numbers in an AP, 4 numbers in an AP. So how exactly do we assume those numbers so that calculation becomes easy? So we have number of terms and then we have those terms. So see, whenever the question says that you have 3 terms which are in AP, always take them as A minus D, A and A plus D. The logic behind this is when you add these terms, A minus D plus A plus D or D cancel ho jayega, 3 aa jayega. Similarly, if you have to take 4 terms in an AP, it'll be A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. See, common difference same as subnet. And if you have to take 5 terms, बहुत rarely 5 terms का आता है, but you should know A minus 2D, A minus D, A plus D and A plus 2D. 2 years ago, IIT में question आया था of selecting 5 terms in AP. उसमें यही trick लगनी थी. Is this clear? So I want you to make a note of this, बच्चों, and then I'll show you some questions which are based on this concept. All right. So let's look at a question based on this. We have the sum of 3 numbers. The sum of 3 numbers in AP is minus 3. Their product is 8. Find the numbers. All right. So what we're going to do is we'll say let the numbers be A minus D, comma A plus D. Now the first thing given to us is the sum of these numbers is negative 3. That means first number plus the second number plus the third number is negative 3. So minus D plus D cancels out. So 3A is negative 3, A is equal to negative. Does any child have any doubt in this? Yes or no? Any doubt, beta? No, sir. Fantastic. Next we're given their product is 8, means A minus D into A plus D is equal to 8. अब देखो A minus D into A plus D is A square minus D square multiplied by A is equal to 8. Substitute the value of A as minus 1. So we have minus 1 square minus D square into minus 1 is equal to 8. That is 1 minus D square into minus 1 is equal to 8. So I can say over here D square minus 1 by 1 minus D square minus 1 is D square minus 1 is equal to 8. So D square is equal to 9. So if D square is equal to 9, what is the value of D? Can anyone tell me? Yes. If D 3. square, wrong. If D square is equal to 9, what is D? Sir, 3. Wrong. Sir, minus plus 3. Excellent. Very good. Plus minus 3 होगा ना बेटा? See, minus 3 square is also 9. 3 square is also 9. है ना? Plus minus 3. ठीक है? अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 केसेस बनाने पड़ेंगे. Case 1. A की वैल्यू तो मेरी फिक्स्ड है. That is minus 1. So A is equal to minus 1. और एक बार D को मैं plus 3 लेता हूँ. Now what are my numbers बेटा? A minus D, A and A plus D. So let's see what the numbers are. A minus D. So A minus D. That is negative 4. A, that is negative 1. And A plus D, that is 2. So we get the numbers as minus 4, minus 1 and 2. Right? Now let's do case 2. Case 2 is A is minus 1, D is minus 3. So A minus D क्या बन जाएगा? A minus minus 3, that is minus 1 plus 3, that is 2. A is minus 1 and A plus D, that is minus 1 plus minus 3, that is minus 4. So do you agree the numbers are the same? Yes or no? है ना? So the answer is minus 4, minus 1, 2. लेकिन एग्जाम में आपको दोनों केसेस दिखाने पड़ेंगे. Is this clear? Right? Is this question clear to all of you, beta? Yes or no? Yes, sir. Fantastic. Make a note of it. Now, बच्चों, in case you did not know the technique I told you,
आप 3 नंबर्स ने एपी को कैसे अज्यूम करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, उससे भी आंसर आ जाता. इट्स जस्ट दैट थोड़ा कैलकुलेशंस बड़े हो जाते, so it will take more time. So that is why always assume in this way, it will save you a lot of time. हाँ जी, look at the next question. अब मैं आपको वो क्वेश्चन दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है. So the question which came in your board exam, ये था. Divide 32 into 4 parts. Divide 32 into 4 parts which are in AP, which are in AP such that the product of extremes is to the product of means is 7:15. ठीक है बेटा. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन वी हैव टू डू. अब यहां पे हमें क्या करना है, 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ऑलराइट, so what we're going to do is basically we want 4 numbers which are in AP. So can anyone tell me what are the 4 numbers we'll take? हाँ जी, Sir, we फटाफट took बताओ. a minus 3d, a शाबाश minus बेटा, d, a plus d, a plus 3d. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अब देखो बेटा, ये जो है हमने 32 को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो व्हाट इज द सम ऑफ दीस 4 नंबर्स बेटा? 32. Plus 32. Excellent, excellent. So that means a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is 32, है ना. So देखो, minus 3d plus 3d चला गया, minus d plus d चला गया. So we have 4a is equal to 32, that is a is equal to 8. Any doubt? अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. आपने मैथ से किस कंसेप्ट में ये पर्टिकुलर टर्म्स देखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, कहाँ आता है ये? रेशियो एंड प्रपोर्शन. इफ 4 numbers are in proportion तो हम कहते हैं ना प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. सो कहने का मतलब क्या है, इफ a is to b as c is to d, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये होता है ना. तो यहाँ पे उसने उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया बेटा. तो हम क्या करेंगे, पहले हम 4 नंबर्स को यहाँ पे लिखेंगे, a minus 3d, डू नॉट चेंज द सीक्वेंस. ठीक है. अब वो यहाँ पे कह रहा है आपसे, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी a minus 3d into a plus 3d is to product of means, यानी a minus d into a plus d. ये रेशियो हमें क्या दिया हुआ है, 7:15. इसमें किसी बच्चे को डाउट है या ना बेटा? एनी डाउट एट ऑल? No, sir. फैंटास्टिक. व्हाट इज a minus 3d into a plus 3d? a square minus b square. a minus d into a plus d, a square minus b square is 7/15. ठीक है. अभी बेटा a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना. क्यों? अगर आपने a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया, 64 into 15 हो जाएगा, बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा. तो हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे टू सेव टाइम. ठीक है. अभी आप क्या करेंगे, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 15 into a square minus 9d square is equal to 7 into a square minus d square. So we get 15a square minus 135d square is 7a square minus 7d square. Make sure your tables up to 20 are very good. Bring it over here. So 15a square minus 7a square is 135d square minus 7d square. So we have 8a square is 128d square, है ना. तो हमें निकालना क्या है, d निकालना है ना. सो d स्क्वायर इज 8a स्क्वायर बाय 128, है ना. 2 से डिवाइड करो 4, 2 से डिवाइड करो 64, 116. सो वी गेट d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 16. अब a को सब्स्टिट्यूट करो. a की वैल्यू क्या है बेटा, 8. सो इट इज 8 स्क्वायर बाय 16, दैट इज 64 बाय 16, दैट इज 4. हाँ जी. तो मेरे पास आ गया d स्क्वायर इज इक्वल टू 4. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d बेटा? Plus or minus 2. शाबाश, d is plus minus 2. तो देखो d आ गया मेरे पास, a आ गया. So again we'll make two cases. Case 1 where a is equal to 8, d is equal to plus 2, है ना. And we'll have case 2
where a is equal to 8, d is equal to -2. So my numbers are a minus 3d, a minus d, a plus d, and a plus 3d. So a minus 3d yani 2, a minus d 6, a plus d 10, a plus 3 into d, that is 40. Perfect है. Next, a minus 3d, a minus d, a plus d, and a plus 3d. So a minus 3 times -2 ये हो जाएगा exactly जो सीक्वेंस है ना उसका उल्टा आ जाएगा. 10, a plus -2 6, 8 plus 3 into -2, that is 2. So we'll give the answer over here. हमारा आंसर क्या है? It is 2, 6, 10, 14. Is this question clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. Fantastic. ये क्वेश्चन आया था आपका आई थिंक 2019 में आया था क्वेश्चन. ठीक है, मेक अ नोट बेटा. लुक एट दिस क्वेश्चन, आपको दिया हुआ है. इफ द नंबर्स a, b, c, d, e form an AP, then find the value of, हाँ जी रौनक, a minus 4b plus 6c minus 4d plus e. Try this question बेटा. देखो बेटा, over here the concept is these 5 numbers are in AP, so let the numbers be. अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक स्मॉल a है तो हम क्या बोलेंगे? a minus 2d, a minus d, a plus d, and a plus 2d. This is my small a, this is my small b, this is my small c, this is my small d, this is my small e. अब एक्सप्रेशन क्या है बेटा? a minus 4b plus 6c minus 4d plus c. Substitute the value. So a meaning a minus 2d minus 4 times b यानी a minus d plus 6 times c minus 4 times d plus e, है ना? तो ये आ जाएगा a minus 2d minus 4 into a minus 4a minus 4 into minus d plus 4d plus 6a minus 4a minus 4d plus a plus 2d. So देखो बेटा, a minus 4a minus 3a plus 6a 3a minus 4a minus a plus a 0 minus 2d plus 4d 2d plus 2d 4d minus 4d 0. Answer is 0. हाँ जी, आ गया सबका? Yes sir, आ गया. है ना? Alright guys, so I hope this is clear to all of you, है ना? Now we'll do some questions on sum of n terms. मैंने आपको n टर्म के सारे करा दिया, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स करा दिया. अब बस एक ही कॉन्सेप्ट बचा है आपका, सम ऑफ टर्म्स. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. हाँ जी, look at this question. We have solve 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus dot 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 plus x is equal to 287. This question came in 2020 examination. Try करो बेटा. Now what is the concept in this question? यहाँ पे जो पर्टिकुलर सीक्वेंस आपको दी हुई है वो एक एपी है और यहाँ पे क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स. तो बेसिकली a is 1, कॉमन डिफरेंस इज 4 minus 1, that is 3, एंड सम ऑफ एन टर्म्स हमें दिया हुआ है 287. ठीक है, हमें निकालना क्या? हमें x की वैल्यू निकालनी है. नाउ व्हाट इज x ओवर हियर? राइट, x इज द nth टर्म ऑफ द एपी. तो हमें बेसिकली हम देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन. पहला का हम क्या कर सकते हैं? वी कैन से दैट एस एन इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 times d. Do you agree? Okay, we have an answer. 1 second, I'll just check. आंसर चेक करता हूँ बेटा, आपका आंसर सही है कि नहीं. यस, वेरी गुड भार्गव, दैट्स राइट. ठीक है, सो 287 is n by 2 into 2 times a plus n minus 1 times 3, है ना? तो ये आ जाएगा 2 को इधर ले आओ,
So we get this as 574 is n times 2 plus 3n minus 3. So 574 is n into 3n minus 1. So 574 is 3n square minus n. So we get 3n square minus n minus 574 is equal to 0. बेटा इसमें किसी को डाउट? यस और नो? No, sir. पक्का? No, sir. Let me just check. मैंने किया तो सही है ना? Sn is n by 2 2 times a plus n minus 1 times 2. हाँ जी. All right. Now the question is we have to basically solve this quadratic equation. ठीक है? No भव्य. राइट. सो ए की वैल्यू क्या है? 3. बी की वैल्यू क्या है? -1. सी की वैल्यू है -574. So we'll first find the discriminant, that is b square minus 4ac. So b square minus 4ac तो हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 574, है ना? वन प्लस 6888, दैट इज 6889. अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट चाहिए होता है. सो विल फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6889. Largest square less than equal to 68 is 8. 8 8s are 64. 4 163 into 3, है ना? तो स्क्वायर रूट ऑफ डी इज माइनस आई मीन 83. तो अब मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा? वी नो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिटर्मिनेंट बाय 2a. तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा मेरा? माइनस बी. बी की वैल्यू क्या है? -1. सो माइनस बी प्लस माइनस 83 बाय 2 टाइम्स a, दैट इज 3. राइट. तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 83 बाय 6, दैट इज, अब देखो नेगेटिव वैल्यू तो हम लेंगे नहीं. 1 प्लस 83 बाय 6, दैट इज 84 बाय 6. तो n की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 14. और n इज इक्वल टू 1 माइनस 83 बाय 6 माइनस 82 बाय 6 जो हम रिजेक्ट कर देंगे. एक तो डेसिमल वैल्यू है, नेगेटिव नहीं हो सकता. नाउ n इज इक्वल टू 14 का मतलब क्या है? इस पूरे एपी में 14 टर्म्स है. मुझे क्या चाहिए? लास्ट टर्म चाहिए ना 14 टर्म. सो x इज नथिंग बट a14, दैट इज नथिंग बट a प्लस 13d बेटा. सो a की वैल्यू क्या है? 3, राइट, प्लस 13d. d की वैल्यू क्या है? 3. तो 13 times 3, that is 3 plus 39, that is 42. So this is the value of x. Did you all understand this beta? Yes or no? Can I please make a note? Then I'll show you another way of doing this question. बेटा इसमें एक छोटा करेक्शन है. a plus 13, यहाँ पे a जो है ना ap का है. It is not 3, it is 1. It will be 40. My bad. I repeat, ये क्वाड्रेटिक का है, ये ap का है. ap का है 1 है. So it will be 1 plus 13d. 1 plus 40. This is the answer, 40. अब देखो बेटा, the same question, there's another way you could have done it. We have 1 plus 4 plus 7 plus 10 plus x is equal to 287. हम क्या बोलेंगे? a is equal to 1, d is equal to 3. अब यहाँ पे x क्या है? मेरा nth टर्म ही तो है. x is my nth term, that is a plus n minus 1 times d, that is 1 plus n minus 1 times 3, that is 1 plus 3n minus 3, that is 3n minus 2. Do you all agree बेटा? अब हमें पता है एक और फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का. सम ऑफ n टर्म्स इज n by 2 into first term plus last term, है ना? So we'll use this formula over here. So 287 is n by 2 into first term, that is 1, plus last term, that is 3n minus 2. Is this clear? Alright. So 2 को यहाँ भेज दो तो कितना आ जाएगा? 574 is n times 3n minus 1. So we get 574 is 3n square minus n. तो देखो यहाँ से भी वही quadratic equation आ जाएगा. Is this clear? And then you can solve it. तो आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला लगाओ, चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाओ. You will ultimately get the same quadratic.
ठीक है, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14, वो वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो। सो 3 into 14 minus 2, that is 42 minus 2, that is 40. Yes, is this clear for all of you beta? Yes or no? Yes, sir. चलो और क्वेश्चन लिखो। We have in an AP of 50 terms, in an AP of 50 terms, the sum of first 10 terms, the sum of first 10 terms is 210, and the sum of its last 15 terms is 2565. Find the AP. हाँ जी बेटा, ट्राई करो। देखो बेटा, in this question, see, this question is Delhi 2014. In an AP of 50 terms, the sum of first 10 terms is 210. तो हम क्या बोलेंगे? Sum of n terms is n by 2 into 2a plus n minus 1 times d. हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो sum of 10 terms is 10 by 2, right? Very good, Ashish. N by 2 into 2 times a plus 10 minus 1 times d. So sum of 10 terms हमें क्या दिया? 210 is equal to 5 times 2a plus 9d. इस 5 को यहाँ ले आओ, तो 42 is equal to 2a plus 9d. This is, आप ये इक्वेशन आ गया बेटा? Yes. Okay. Now the catch is the sum of its last 15 terms. अब देखो, अगर AP में 50 terms है, तो last 15 terms क्या होंगे? From which term to which term? तो कभी भी आपको ये निकालना हो, उसमें फॉर्मूला होता है n minus r plus 1th term. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, we can say, देखो, we can say rth term from end is equal to n minus r plus 1th term from beginning. तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 15th term from the end. So what I want is 15th term from end. So this is n. Total there are 50 terms. Minus r क्या है? 15 plus 1. That is, it is 36 term from beginning. Is this clear बेटा? तो अब मुझे क्या दिया हुआ है कि 36 टर्म प्लस 37 टर्म प्लस 38 टर्म अप टिल 58 टर्म, ये चीज मुझे दी हुआ है 2565. डू यू अग्री? है ना? तो अगेन आई अप्लाई द सेम फॉर्मूला. सो आई कैन शो हियर सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, इज n by 2 इनटू, वी कैन से, या तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाओ. लेट्स से फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. सो 2565, how many terms are there? 15 by 2. Now what is the first term over here? A36 is my first term. ये क्या हो जाएगा? A plus 35D. प्लस लास्ट टर्म मेरा क्या है? 50th टर्म. ये हो जाएगा A plus 49D. Do you all agree बेटा? Yes or no? Yes, sir. So 2565 is 15 by 2 into 2A plus 84D. है ना? यहां से मैं 2 कॉमन ले लूंगा. So we have 2565 is 15 by 2 into, take 2 common, A plus 42D. 2 and 2 cancel. So 2565 divided by 15 is A plus 42D. ये कितनी बार जाएगा? 2565 divided by 15. 1 7 1. So we have A plus 42D is 171. Is this clear for everyone? Yes or no बेटा? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे? है ना? तो अब मैं दोनों इक्वेशन को यहां लिख लेता हूं. पहला है 2a plus 9d is equal to 42, है ना? और दूसरा है a plus 42d is 171.
विल यूज एलिमिनेशन, तो यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 2a प्लस 84d इज 342, सब्ट्रैक्ट द 2 तो कितना आ जाएगा, 84 माइनस 9 दैट इज 75d इज इक्वल टू 300। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो d की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो a प्लस 42d is 171. So a plus 168 is 171. So a is equal to 3. Is this clear? Right? तब AP मेरा क्या बन गया, a, फिर उस पर आप कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, +4 +4 +4. So this over here is my AP. All of you understood beta, yes or no? Yes, sir. Fantastic. Make a note beta. ये कॉन्सेप्ट का ध्यान रखो। नेक्स्ट देखो, आपको दिया हुआ है if Sn the sum of first n terms of an AP is given by Sn is equal to 5n square plus 3n, then find its nth term। हाँ जी, अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या होता है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज S1, so you'll put this as right 5 times 1 square plus 3 times 1, that is 5 plus 3, that is 8, है ना। अब देखो S2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, तो S2 क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, दैट इज 20 प्लस 6, दैट इज 26। अब देखो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म इज 26 एंड द फर्स्ट टर्म इज 8, तो 8 इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, 8 प्लस सेकेंड टर्म इज 26, सो सेकेंड टर्म इज 18। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 18 माइनस 8 दैट इज 10। अब a है आपके पास, d है, तो nth टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1d, so a is 8 plus n minus 1 times 10, that is 8 plus 10n minus 10, that is 10n minus 2। Did you all understand this method, yes or no? हाँ जी बच्चा, did you all understand, yes or no? Make a note। अब देखो बेटा, इसी करने का एक और तरीका होता है, मेथड नंबर 2। देखो अगर हमारे पास मान लो 5 नंबर्स है, लेट्स से 5 नंबर्स A B C D E, अगर मुझे E की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, सम ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स ना। Do you all agree? So based on this concept we can say the nth term of an AP is sum of first n numbers minus the sum of the numbers preceding it, है ना। ये चीज मैंने यहाँ पे की है। तो अब देखो मुझे यहाँ पे Sn क्या दिया हुआ था, 5n स्क्वायर प्लस 3n, है ना। तो यहाँ पे an मेरा क्या बन जाएगा, सम ऑफ n नंबर्स, दैट इज 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस Sn माइनस 1, राइट, n माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस 3n माइनस 1, तो 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5 टाइम्स a minus b the whole square is a square plus b square minus 2ab plus 3n minus 3, that is 5n square plus 3n minus 5n square plus 5 minus 10n plus 3n minus 3, that is 5n square plus 3n minus, we have 5n square minus 7n plus 2, yeah, so this becomes 5n square plus 3n minus 5n square plus 7n minus 2, cancel cancel, that is 10n minus 2।
Remember AP का जो nth term it should always be linear in n, means power of n. Is this clear? So this is another way of doing this question. Make a note. Next question we have is, if the mth term of an AP is 1 by n and the nth term is 1 by m, show that the sum of mn terms is half times mn plus 1. ठीक है? So देखो बेटा, the mth term of an AP is 1 by n. So देखो, mth term of an AP is 1 by m, meaning a plus m minus 1 times d is 1 by m, or we can say a plus md minus d is 1 by n, equation number 1. And the nth term is 1 by m. So nth term is 1 by m, meaning a plus n minus 1 times d is 1 by m, that is a plus md minus d is 1 by n. Call this equation number 2. ठीक है? अब देखो, using these two equations हम क्या करेंगे? We'll subtract the two. So we have a plus md minus d is 1 by n and a plus md minus d is 1 by m. इसको subtract करते हैं, तो minus minus plus minus cancel. So we get md minus nd is 1 by n minus 1 by n. Take d common from here. M minus n is m minus n by mn. Cancel. So we get d is equal to 1 by m. है ना? इस चीज को हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. So a plus md minus d is 1 by n. So ये 1 by n cancel होगा. So from here we get a is equal to 1 by m. Is this clear बेटा? अब देखो, हमें निकालना क्या है? Sum of mn terms. So we have sum of mn terms is mn by 2 into 2a plus mn minus 1 times d. Let's substitute the values. So mn by 2 into 2 times a plus mn minus 1 into d by mn. तो ये हो जाएगा mn by 2 into 2 plus mn minus 1 by mn. mn cancel. ये हो जाएगा mn plus 1 by 2. So we get this as sum of mn terms is half times mn plus 1. और exactly मैं यही prove करना था. Beta, is this clear for all of you? Yes or no? Yes. Fantastic. Make a note. Next देखो. If in an AP the sum of m terms is equal to n and the sum of n terms is equal to m, then prove that the sum of m plus n terms is minus of m plus n. ठीक है? अब देखो बेटा, the sum of m terms is equal to n. So first equation is sum of m terms is equal to n. इसको solve कर लो. So m by 2 into 2a plus m minus 1 times d is equal to n. Take the 2 over there. So m times 2a plus md minus d is equal to 2n. Open the bracket. 2am plus m square d minus md is equal to 2n. Do you agree? This is equation number 1.
Next you're given sum of n terms is equal to m. So sum of n terms is equal to m, meaning n by 2 into 2a plus n minus 1 times d is equal to m. Take the 2 over there, so n times 2a plus nd minus d is equal to 2m. Open the bracket. So 2an plus n square d minus nd is equal to 2m. Is this clear? अब देखो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन है, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लो. So we'll do equation 1 minus equation 2. So 2am minus 2an plus m square d minus n square d minus md minus minus nd means minus md plus nd is equal to 2n minus 2n. है ना बेटा? अब यहां से मैं क्या कर सकता हूँ, 2a कॉमन ले सकता हूँ, तो 2a into m minus n. From here I can take d common to m square minus n square. Now देखो यहाँ भी m minus n, m minus n, so I'll take minus d common from here to get m minus n. Here also I'll take minus 2 common to get m minus n. Is this clear? So we have 2a into m minus n plus d times m square minus n square क्या होता है, m minus n into m plus n minus d into m minus n is minus 2 times m minus n. यहाँ भी m minus n, यहाँ भी m minus n, यहाँ भी m minus n, take it common. So we get this as 2a plus d into m plus n minus d is minus 2 into m minus n. m minus n cancels off. और यहाँ से मैं d कॉमन ले लूंगा. So 2a plus m plus n minus 1 times d is equal to minus 2. Till here is it clear beta, yes or no? Yeah. Now sum of m plus n terms क्या हो जाएगा, m plus n by 2 into 2a plus m plus n minus 1 times d. है ना बेटा? तो अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस 2. सो दिस इज m plus n by 2 into minus 2, that is minus m plus n. So we just got sum of m plus n terms is minus m plus n, which is exactly what we had to prove. So hence, any doubt beta, please ask.